So hello everyone and welcome to Career Launcher. So I hope you are aware that every Sunday at 8 p.m. We meet you on this YouTube channel where we discuss static GK. And if I'm audible and visible, please write yes in the comments so that we can begin with the class. Channel where we discuss static GK. Okay, I think I'm audible and visible. So let us begin with today's class. So let us start with questions. तो हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डिस्कस करते हैं and I keep asking questions and you have to answer it in the live chat. Is the slide visible? Slide visible है? Everything is fine? फॉर्म में डिस्कस करते हैं. Okay. Let's move on. The next, let's move on to the first question. The first question says, which of the following is the largest brackish water lake in Asia? This we have done. Last class में last few questions था, उसको हम लोग दोबारा रिवाइज करा दे रहे हैं. So the largest brackish water lake आपको बताना है, largest फ्रेश वाटर लेक बताना है एंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया. यू हैव टू टेल मी दिस. सो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इज, यस सारा यू राइट, बी इज द राइट आंसर, चिल्का लेक इन ओडिशा. ठीक है. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, yes Sarah and CLAT aspirant, you both were right. B is the right answer. Largest freshwater lake is Wular Lake in Jammu and Kashmir. So ये होगा आंसर है ना. ठीक है, in Jammu and Kashmir. And largest salt water lake कहाँ मिलेगा? Freshwater is Wular Lake. Yes, crazy Billa, you're right. Sarah, you're right. Wular Lake. Largest salt water lake. Largest salt water lake. The right answer is Sambar Lake in Rajasthan. ठीक है ना. Yes, Sarah, you're right. ठीक है, सांबर लेक राजस्थान. ठीक है. अच्छा, why is option C and why is famous? For what? And in which state you will find this? ये सब इंपॉर्टेंट, चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन सी, लोकतक लेक, why it is famous and what is there? What is so special that is there? Yes, we are having only floating national park, only floating national park there है ना. And what is the name of that national park? And it is in which state? ठीक है, मणिपुर. Only floating national park is केबुल लामजाओ, लामजाओ नेशनल पार्क. ठीक है. Yes, Sarah, you're right. हाँ. And Pulicat Lake, why it is famous? इसमें क्या खास बात है? What is so special about Pulicat Lake? Anyone? What is so special about Pulicat Lake? Why is Pulicat Lake something special you should be knowing about it? देखो, let me tell you. So इसका तो आंसर बी था. Let me tell you about that, है ना. तो the answer to this question was actually चिल्का लेक. ये तो मैंने बता दिया कि ओडिशा में चिल्का लेक है, in ओडिशा. Now ये है आंध्र प्रदेश. ठीक है. एंड दिस इज तमिलनाडु. ठीक है. आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में एक लेक है. दिस इज पुलिकट लेक. दिस बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश, but it is actually the middle between Andhra Pradesh and Tamil Nadu. And it is special because on the eastern side of this lake here you will find an island. This island is Sri Harikota Island.
and you have to tell me why it is special for India. इसमें क्या खास बात है? What is special with Sriharikota Island? Yes, very good. Sara Manya Tiwari, CLAT aspirant, right? Huh. So here you will find SDSC, Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. From where? ISRO launches satellite, है ना? SDSC, ठीक है? Satish Dhawan Space Center is at Sriharikota, and this island, Sriharikota Island, belongs to Andhra Pradesh, है ना? Pulikat Lake is between both connecting Andhra Pradesh and Tamil Nadu, but this island actually, ये जो है आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है. दैट आई शुड बी आंसरिंग, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है दिस. ठीक है, ये पता होना चाहिए. ओके, इट हैज अनदर नेम आल्सो, व्हाट वी कॉल इट एज SHAR, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज भी लिखते हैं. ठीक है, so both are actually the same thing. So sometimes these are asked कि Satish Dhawan Space Center located at Sriharikota is actually in which state? I have seen this question in some exam. The answer is Andhra Pradesh. You have to be very careful. Yes, and these are the things you should be knowing about. ठीक है, ये तो ओडिशा का छिलका लेके, है ना. नेक्स्ट इज गोदावरी रिवर. दिस इज एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीयूटी में पूछा था अभी 2-3 साल पहले, है ना. सो दे आस्क्ड इन मैच द फॉलोइंग सिटी के मैच द फॉलोइंग में. प्लीज टेल मी व्हिच स्टेट फ्रॉम व्हिच सिटी एक्चुअली इट ओरिजिनेट्स. वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. शुरू का 2-3 क्वेश्चन जो एक तरह से रिपीटेशन ही है, तो आई होप यू शुड बी आंसरिंग इट. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के नासिक से, है ना. बी इज द राइट आंसर. यस. So I'm not going very much in detail because it is actually the repetition. We had earlier done it. So ये मुंबई है, यहाँ पे आपको नासिक मिलेगा, है ना. So from here actually this Godavari river is something like this. It is considered as Ganga of South, है ना. Yes, Manya Tiwari, Sara, CLAT aspirant, Shreya, you all are right. हाँ, त्रिम्बकेश्वर नासिक से, है ना. So महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा से क्रॉस करती है. यस, गुरु शिखर. इस क्लास में थे हम लोग ना, लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन पे थे. गुरु शिखर, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ राजस्थान, लाइज ऑन ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, अरावली, काराकोरम. एंड आई थिंक इससे काफी हद तक क्वेश्चन आंसर हो गया, आसान हो गया. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अरावली रेंज. सी इज द राइट आंसर. यस, CLAT aspirant, ग्रेजी बिल्ला, केसर अग्रवाल, सारा मान्य तिवारी, ऑल राइट. सी इज द राइट आंसर. सो this is the state of Rajasthan and this is Aravalis. And south of Aravalis, यहाँ पर आपको मिलेगा गुरु शिखर, माउंटेन पीक. ठीक है, माउंट आबू भी वहीं पर है ना. एंड रिसेंटली Aravalis was in the news with regards to the 100-meter rule, है ना. The Supreme Court took suo cognizance etc. ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए. चलो अब अरावली की बात करें तो कुछ चीजें और बात कर लेते हैं अरावली से रिलेटेड. यहाँ पे एक डेजर्ट है. विच इज दैट डेजर्ट? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डेजर्ट? तो अरावलीज को मैं ब्लैक से बना रहा हूं. दिस इज समथिंग अरावलीज, है ना. ये अरावलीज हो गया. यहाँ पे थार डेजर्ट है. नाउ थार इज फेमस एज अ कार. अब तो थार इज फेमस फॉर सम अदर थिंग, है ना, कार. एंड एक चीज और बताना है, यहाँ पे से एक रिवर चलती है. From Aravalis, it goes like this, and even before reaching, actually the Arabian Sea actually dies down in Gulf of Kutch. इस रिवर का नाम क्या है? अरावली से शुरू होती है, अरेबियन सी आने से पहले ही इसका मतलब एक तरह से इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, वाटर खत्म हो जाता है. Somewhere in the Gulf of Kutch it actually dies down. Which river I am talking about? Yes, Sarah, you're right. Loni River. Loni. Is CLAT aspirant, you are also right. मान्यता very right. हाँ, ओके. एक चीज और या अच्छा आपको बताना ही, मैं रेड से एक रिवर बना रहा हूं. ठीक है, दिस इज अ रिवर and there is a canal that has been dug. So this canal I am making with the purple pen. So please tell me the name of the canal and please tell me the name of the river. So red is color is the red of the river and purple color say that is the name of the canal. In Western Rajasthan, very famous. Those who are actually from,
प्लीज सी इट केयरफुली। मैंने रेड पेन कहां पर बनाया है? इंडस तो किसी भी हाल में नहीं होगा, इंडस तो ऊपर लद्दाख की तरफ उठ के जाता है। यस, इंदिरा गांधी कैनाल, केसर अग्रवाल ने आधा लिखा है और केसी पिला, राइट। हाँ, सो दिस इज इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, वेरी फेमस। इफ यू लिव इन वेस्टर्न राजस्थान रीजन, बाड़मेर, बीकानेर, उस सब जगह के अगर आप हो तो आपको पता होना चाहिए। एंड दिस वन इज सतलज रिवर, ये पीछे से आती है ना, शिपकिला पास क्रॉस करती है हिमाचल में, सतलज, ठीक है। समवन वाज सेइंग इंडस, इंडस तो ऐसे जाती है ना ऊपर उठ के लद्दाख की तरफ, ठीक है। सो सतलज रिवर एंड सतलज एक्चुअली इंडस में मिल जाती है, यस दैट्स ट्रू, ठीक है। सो फ्रॉम सतलज रिवर इंदिरा गांधी कैनाल हैज बीन डग and actually it provides water in western Rajasthan, especially in Thar region, ठीक है। that is what you should be knowing about, ठीक है। so ये सब पता होना चाहिए। एंड ट्रिब्यूटरी नहीं है, नेचुरल रिवर होता था ट्रिब्यूटरी कहते हैं, इट्स नॉट नेचुरल, इट हैज बीन डग, सो इट्स कंसीडर्ड एज अ कैनाल, है ना, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, headquarter of World Bank, headquarter of IMF, and these two are result of which agreement or which international agreement? Washington DC, and headquarter of IMF कहाँ है? Yes, very good. These are called as Bretton Woods twins. So Bretton Woods agreement, Bretton Woods is a place in America in New Hampshire. So Bretton Woods agreement was signed in 1944, which resulted into the establishment of World Bank, IMF, and there was one more institution, GATT, वो उतना successful नहीं हुआ, so leave that. So these two together are called as Bretton Woods twins, and both are actually headquartered in Washington DC. This is the right answer. 1944 में हुआ था, ठीक है ना। And please tell me who is actually the chairman or president of World Bank? He is an Indian origin person. हाँ, GATT को रिप्लेस कर दिया गया WTO से, राइट। हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक मिस्टर अजय बांगा, ठीक है। यस, क्लैट एस्पिरेंट श्रेया मान्या तिवारी ऑल राइट, है ना, ठीक है। तो ये सब आपको पता होगा, है ना। प्रेसिडेंट इज मिस्टर अजय बांगा एंड MD एंड CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज अंशुला कांत, वॉशिंगटन DC में इनका हेडक्वार्टर। ये भी एक जगह एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट डज DC स्टैंड्स फॉर इन वॉशिंगटन DC? अच्छा, यूएस में दो जगह है, ठीक है। एक को कहते हैं वॉशिंगटन स्टेट, वॉशिंगटन इज एक्चुअली अ प्रोविंस, एंड वन इज वॉशिंगटन DC, ठीक है। वॉशिंगटन DC इज एक्चुअली द कैपिटल, सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ सिटी टाइप थिंग, बट दिस इज एक्चुअली अ प्रोविंस, ये एक तरह से प्रोविंस या स्टेट है, ठीक है। एंड बोथ आर एक्चुअली माइल्स अपार्ट, दोनों एक छोर पे, एक दूसरे छोर पे, इट्स लाइक दैट। Yes, Shreya, you are right. District of Columbia, DC stands for District of Columbia. D is the right answer to this question, ठीक है ना। Washington DC, formerly the District of Columbia, known as Washington DC, capital and federal district of USA, ठीक है। Named after George Washington, है ना, फाउंडिंग फादर हैं इनके, अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर एटसेट्रा में जॉर्ज वाशिंगटन का नाम आपने सुना होगा। तो मैं आपको ऐसे बता दूं, जैसे मान लो कि कहीं पे मैप है क्या पीछे में? नहीं, मैप नहीं, चलो कोई बात नहीं। जैसे लेट्स से दिस इज यूएसए, यूएस का जो मेन लैंड है उसका शेप ऐसा कुछ दिखता है ना। इसके नीचे मैक्सिको है ऐसे, ये मैक्सिको हो गया, ये यूएसए हो गया, है ना। तो यहां पर आपको मिलेगा वॉशिंगटन DC, DC। तो यहां पर समवेयर मिलेगा आपको वॉशिंगटन स्टेट, वॉशिंगटन स्टेट और वॉशिंगटन प्रोविंस, ठीक है। और वॉशिंगटन DC से थोड़ा सा ऊपर जाओगे
तो यहाँ पे कहीं पे आपको मिलेगा न्यूयॉर्क. ठीक है. नेक्स्ट इज हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, एंड दिस हैज बीन वेरी मच इन द न्यूज इवन राइट नाउ, सो यू शुड बी नोइंग. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल एंड प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, ये बताना है. यस, वेरी गुड. बेंजामिन नेतन्याहू, डी इज द राइट आंसर. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, ये भी बताइए. मसूद पेजेश्कियान नहीं, मसूद पेजेश्कियान इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान. समवन इज राइटिंग मसूद पेजेश्कियान. प्रेसिडेंट ऑफ ईरान हो गया. तो आई एम आस्किंग प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल. प्रेसिडेंट आइजैक हेrzog. यस श्रेया, यू राइट. हाँ, आइजैक हेrzog. ओके, चलो एक सवाल और इजराइल से. पार्लियामेंट ऑफ इजराइल, because Israel is in the news, so they can ask question. Parliament of Israel. इसराइल के पार्लियामेंट मजलिस तो आई थिंक ईरान या किसी और कंट्री का है ना. नेसेट. पार्लियामेंट ऑफ इजराइल पूछ रहा हूँ, नेसेट है ना. एंड वन मोर थिंग, एंड रिसेंटली मोदी जी गॉट नेसेट अवार्ड है ना फ्रॉम इजराइल्स पार्लियामेंट है ना. बिफोर द वॉर मोदी जी विजिटेड देयर, ही गॉट द अवार्ड राइट. हाँ, मजलिस आई थिंक ईरान का है. हाँ, और एक चीज और पूछना था. यस, करेंसी, because we have seen when Russia Ukraine war was happening, they had asked about like currency of Israel, currency of Ukraine they had asked, so they can ask about currency of Israel as well. बताइए. The answer is new shekel. शेकल, ठीक है, न्यू शेकल इज द राइट आंसर. ठीक है. सिमिलरली ईरान के बारे में बताइए. ईरान का प्रेसिडेंट वी हैव डिस्कस्ड, सो ईरान न्यू सुप्रीम लीडर बताइए. द अर्लियर प्रीवियस वन हैड एक्चुअली डाइड. न्यू सुप्रीम लीडर, न्यू प्रेसिडेंट, करेंसी. न्यू प्रेसिडेंट क्या, प्रेसिडेंट तो खैर 1-2 साल से है ना. मुश्तबा खामनेई, वेरी गुड, मुश्तबा खामनेई. एंड प्रेसिडेंट इज हाँ मसूद पेजेश्कियान, ये तो मैंने अभी बताया. एंड व्हाट इज द करेंसी, ईरानियन रियाल. Yes. Capital is Tehran. Very good. Capital is Tehran. And who was the Iran's president before him? I think 2 years back, there was an Iranian president who died in helicopter crash. Who is that? Before Mr. Masood Pezeshkian. यही सब पूछते हैं, पुरानी चीज उठा उठा के पूछ लेते हैं. 2 साल पुराना, 3 साल पुराना. They also do these things. He died in plane crash, helicopter crash. रियासी, हाँ, इब्राहिम रियासी. इब्राहिम राइसी, आई थिंक ऐसे स्पेलिंग था या रियासी था. लेट मी चेक द स्पेलिंग. इब्राहिम रियासी, अरे आई से, हाँ राइसी, ऐसी स्पेलिंग था. ठीक, राइट. ठीक है. सो हियर द राइट आंसर इज डी है ना. तो ये बेंजामिन नेतन्याहू इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल. दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. And Israel, according to Israel, the capital is Jerusalem, but of course it is disputed. So that's why a lot of embassies are actually in Tel Aviv. Even Indian embassy is also in Tel Aviv. Okay. Okay. अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ. लेट मी सी, लाइक आई वांट टू जस्ट, बिकॉज this is about static GK revision. What is the name of the water body that touches Israel?
I'm giving you with an option. Water body that touches Israel. Anyone? Let me see all the response. Some people were initially saying Mediterranean Sea. Okay, let me add the map in the slide. ठीक है? Because it is very much in the so अभी map क्यों नहीं खुल रहा है? Yes. D someone saying Sea of Galilee Dead Sea नहीं टच करता है. चलो देख लेते हैं. Let me add the map. ठीक है. Just hold on for a few seconds. ठीक है. एक सेकंड रुक जाओ. देखो. Okay. So this is Mediterranean Sea. ठीक है. This one is Sea of Galilee. This one is Dead Sea. This one is Gulf of Aqaba. ठीक है. अब देखो. This one is Gaza. This one is West Bank. ठीक है. And West Bank, Gaza together is called as Palestine. ठीक है. Okay, now अब गौर से देखो. So of course, and the rest actually, which I'm making with black pen, is Israel. So Israel is touching Mediterranean Sea. Yes, Israel is touching Gulf of Sea of Galilee, right? If you see, Israel is touching Dead Sea also. Yes, Israel is touching Gulf of Aqaba, and there is a very famous port, AILET port of Israel, and Aqaba port of Jordan. That's why it is called as Gulf of Aqaba. So Israel's port, AILET, is there, and Gulf of Aqaba, that's a Aqaba port of Jordan is there. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. And here जो border है West Bank and Jordan की, so let me make it here. Here you will find Jordan River. West Bank इसीलिए नाम पड़ा है, on the West Bank of Jordan River, so it's West Bank. ठीक है? Is it clear? This has to be very crystal clear. Okay, since we are talking about it, now I have one question. This is Gaza. Now, what is this border called? Yes, Rafah border. And it is between which two countries? Between Egypt and Gaza. Yes, so this is Cairo, the capital of Egypt, है ना? So this is Egypt. And ये जो है, इसको कौन सा पेनिनसुला कहते हैं इजिप्ट का? This is a part of Egypt. इसके लिए काफी लड़ाई लड़ी गई है. This is actually which, है ना? This belongs to Sinai Peninsula. Very good. ठीक है ना?
So this one is Gulf of Suez because you will find Suez Canal. ये गल्फ ऑफ सुएज है तो ये वाला सुएज कैनाल है, और ये वाला जो है वो गल्फ ऑफ अकाब है. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे मैं एक रीजन को ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं. व्हाट इज दिस? ये एक्स क्या है? लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर. हाँ, सुएज कैनाल 1869 में डक किया था. वेरी गुड. ये जो एक्स है मैं बता रहा हूं, व्हाट इज दैट? यस, गोलान हाइट्स. गोलान हाइट्स. सो यहां पर इजराइल है एंड दिस इज एक्चुअली सीरिया. सो इट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन, है ना, दमास्कस इज द कैपिटल ऑफ सीरिया. ठीक है, दैट्स गोलान हाइट्स. ओके, हियर इज लेबनान एंड बेरूत. सो देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन which is fighting against, which is supporting Iran and fighting against Israel. Which organization it is? Supported by Iran and they are fighting against Israel. Yes, Manya Tiwari, right? Hezbollah. I got only one correct answer. What happened? Hezbollah. Houthis are there in Yemen, right? But here we are talking about Lebanon. है ना? Houthis are there in Yemen, right? And in Gaza, Hamas. So ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. They can ask questions. ठीक है, कि कौन से कंट्री से हो सकता है मैच करा दे, कि कौन से रीजन में है, एटसेट्रा एंड ऑल. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. All are actually part of there's a term, है ना, all are part of dash, which actually is an initiative of Iran. वो सब मिलके क्या कहेंगे उसको? Sir, I gave the answer. Yes, Southeast in Yemen. Me also, but it was not, I was not able to see on the screen. Okay, let me check. हो सकता है मेरे स्लाइड में नहीं आ रहा हो इसमें कमेंट सेक्शन में. लेट मी चेक. Me also give the answer. It was not visible. Axis of resistance. Very good. हाँ, वही टर्म मैं जानना चाह रहा था. Axis of resistance. ठीक है. Okay, let's move on to the next one. What does P stands for in PAN? PAN card में issued by Income Tax Department. So when you want to file an income tax return, PAN card is required, है ना? The right answer is yes, Sarah. You're right. D is the right answer. परमानेंट अकाउंट नंबर कहते हैं ना. आपने देखा होगा, पैन कार्ड तो जानती होगी. D is the right answer. Yes, Sarah, Shreya, CLAT, right. है ना. Next is this very interesting question. How many banks were nationalized in July 1969 when the first nationalization took place? तो पहले ये बताओ कि nationalization होता क्या है? What is the meaning of nationalization? Government control the resources. ठीक है. Actually, it is actually anyone else? Government control. It is exactly the opposite of privatization. ठीक है. So it means, so the government taking over or buying the private company from private banks. So here it means the private banks were bought by the government, taken over by the government. ठीक है. So अब इसका आंसर बताओ. 1969, how many banks were nationalized? So two big events where banks were nationalized. दो बार ऐसा event हुआ है. One happened in 1969. Another happened in which year? You have to tell me. And how many banks were nationalized in that year?
हाँ, इसका आंसर तो 14 है. 1969 14 banks were nationalized during the time of Indira Gandhi ji. When Indira Gandhi ji was the prime minister. Now please tell me, when was again like the second time the banks were nationalized, in which year and how many banks? Yes, year 1980, and 6 banks were nationalized. Good, very good. Shreya, Shreya, you're right. हाँ, ठीक है. सो ये सब पता होना चाहिए. अच्छा, एक चीज और है, सिंस ये सब क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. इतने डीप में पढ़ना पड़ेगा. यस. अगर मैं आपको बताता हूँ, क्लैट 2020 का क्वेश्चन उठाइए. देयर वाज वन पैसेज टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स. ठीक है. एंड दे हैड यूज्ड द टर्म LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन. दे हैड टॉक्ड अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. तो ये इकोनॉमिक्स का ही तो है. ठीक है. So now there's one more important thing. ठीक है. So 1969 और 1980 में 6 banks were nationalized. At that time also Indira Gandhi ji was the prime minister. ठीक है. So Indira Gandhi ji was the prime minister from 66 to 77 and 80 to 84. ठीक है. That was her tenure as the prime minister of India. Now next is so what we are talking about. हाँ, एक चीज और पूछना था. Now next one thing I want to ask is today. आप एक बार चेक कर लीजिएगा, because many of the banks were actually merged in 2017-18. तो आप एक बार चेक कर लीजिए कितने गवर्नमेंट बैंक्स हैं, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स. PSBs लिखते हैं. You search it. How many public sector banks are there currently? So now let's talk about one more thing I wanted to ask. Yes, in which year India faced balance of payment crisis, and because of which balance of payment crisis mean foreign exchange reserve was very less. Foreign exchange reserve was very less or near to zero, and because of which India took the help of IMF, and IMF decided to help India, but it put some conditions. These things happen in which year? कब की बात है? Yes, very good. 1991. Balance of payment crisis. Foreign exchange are very less. So we took loans from IMF, and IMF put some conditions. What was that condition? So that condition, when we implemented that condition, it led to what? It's a very famous reform in economics that is called. Yes, LPG reforms. Very good. And the very famous question that is being asked is that who was the prime minister at that time and who was the finance minister at that time? LPG reforms थोड़ा सा मैं बता दूंगा, but please tell me who was the prime minister and who was the finance minister. Prime minister was Mr. P.V. Narasimha Rao. And finance minister was Mr. Manmohan Singh, who later on became the prime minister of India. Okay. What is the meaning of LPG reforms? Liberalization, privatization, and globalization. ठीक है. Liberalization, privatization, globalization. So opening up the economy. So before 1991, we were closed the economy. We hardly used to deal in very few cases, we used to deal with the rest of the world. But now after 1991, we increased it, more privatization, liberalization. So easing of reforms, globalization. We started interacting with the rest of the world more. We started importing more more products. We started allowing foreign direct investment. We started allowing foreign companies to come to India. Yes, new economic policy, 1991. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1991 का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. ठीक है. सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके. फिस्कल पॉलिसी इज कंसिडर्ड विद इज रिलेटेड विद व्हाट? तो आंसर से बता दोगे, है ना?
यस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो एग्जिम पॉलिसी कहलाता है, एग्जिम है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इशू ऑफ करेंसी का क्या लेना देना इससे, है ना, पॉपुलेशन का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। सो पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी व्हिच इज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड देयर इज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, or I would say there is something which is released every year by the government to tell to the people of this country that in the upcoming fiscal year this will be our plan of public revenue and expenditure. What is that called with regards to fiscal policy? उसको टर्म को क्या कहते हैं? I'm sure you must have heard that. Every year. Finance Commission comes every 5 years. That's a different thing. Budget, yes. Every year, 1st February, government announces budget to tell us what we'll be doing in future. And the word budget is not mentioned in the constitution. Yes, very good. There is something else mentioned. And one financial statement. Article 112. And one financial statement. And this was asked in some exam that, no, what is the official name that is mentioned there? Okay. So we are stopping this class here. Okay. And we will be meeting you tomorrow at 3 p.m. We'll be having class on removal of Chief Election Commissioner. That has been very much in the news. We'll be talking about Election Commission of India, etc. there. So please meet us tomorrow, 3 p.m. So please subscribe to our channel, press the like button, share this video. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.